Let us start ICSE Mathematics Class 10th Arithmetic and Geometric Progression Chapter 9 Exercise 9D. Question number 2 of 9D is question number 2. Find the sum of the following series. 1, 12, 6, 3, 1.5 and so on to 10 terms. Here A is equal to 12 and R is equal to 6 by 12, that is equal to 1 by 2 or 0.5. Here the common ratio means R, that is less than 1. So we use the formula for Sn, means sum of n terms will be A, that is first term in bracket 1 minus R raised to power n whole divided by 1 minus R. So S10 will be equal to your first term, that is 12 here. Inside the bracket रखो 1 minus 1 by 2 whole raised to power 10. 1 minus 1 by 2, that is, you see 12 upon 1 by 2. When you subtract 1 by 2 from 1, you will get 1 by 2. So inside the bracket, 1 minus 1 by 2 whole raised to power 10, bracket closed, and this will be, now it will become 24. Inside the bracket again, 1 minus 1 by 2, 10 raised to 1 by 2 whole raised to power 10. So this will be your answer of first part of the question number 2. दूसरे पार्ट में देखते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज जो है सीक्वेंस दिया हुआ है 6 minus 3 plus 1 and 1 by 2 minus 3 by 4 plus 2 15 टर्म तक के दिए हुए हैं, उनका हमारे को टोटल निकालना है, जहाँ पर फर्स्ट टर्म है 6, कॉमन रेशियो है -3/6, दैट इज -1/2. तो जब कॉमन रेशियो -1/2 है तो हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? सम ऑफ एन टर्म के लिए ए ब्रैकेट में 1 minus r raised to power n होल अपॉन 1 minus r. S15 निकालना है हमारे को, तो इसके लिए रखिए आप 6 मतलब फर्स्ट टर्म ब्रैकेट के अंदर लिखिए 1 minus 1 by 2 ब्रैकेट क्लोज रेस्ट टू पावर 15 होल डिवाइडेड बाई 1 minus 1 by 2. Solve it, you will get here, this will become plus, so 3 by 2, so 3 will cancel the 6 and we will get 2 by 2, 2 and 2, that will 4. Here inside the bracket, you see the odd power is there, so minus raised to power odd, that will be equal to again minus, so minus and minus, that will become plus, so 1 plus 1 by 2 inside the bracket, so 1 by 2 raised to power 15, so 4 outside of the bracket, in the bracket 1 plus 1 by 2 raised to power 15. This will be your answer of second part. चलिए थर्ड पार्ट को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जिसका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है 2, 6, 18, 54 up to 12 terms. Here A is equal to 2 and common ratio is 6 by 2, that is 3. So R जो कॉमन रेशियो है दैट इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर समेशन ऑफ एन टर्म के लिए फार्मूला जो यूज करेंगे वो ए ब्रैकेट में लिखिए एन आर रेस्ट पावर n -1 अपॉन आर रेस्ट r -1. तो S12 विल बी इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर लिखिए 3 रेस्ट पावर 12 -1 whole divided by 3 minus 1. So
इसीलिए 3 माइनस 1 दैट विल बिकम 2। ऊपर लिखा हुआ है 2, 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 की पावर 12 माइनस 1, 3 रेज़्ड टू पावर 12 माइनस 1, दिस विल बी योर आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट को देखते हैं। जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया हुआ है 6, 12, 24 प्लस सो एंड सो, द लास्ट टर्म दिया हुआ है 1536। a is equal to 6, common ratio is equal to 12 by 6, that is 2. तो लास्ट टर्म निकालने के लिए हम फार्मूला पहले इस्तेमाल करेंगे a r रेज़्ड टू पावर n माइनस 1, दैट इज nth टर्म 6 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। और क्या है हमारा कॉमन रेशियो 2 है, a हमारा 6 है, तो 6 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। सो इसको सॉल्व कीजिए। ये दिया हुआ है लास्ट टर्म कितना है 1536, तो 2 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 एंड इसको 1536 विल बी डिवाइडेड बाय 6, यू विल गेट 256 को फैक्टराइज कर दीजिए, you will get 2 raised to power 8. You see how many number of 2's are there? There are 8 2's are there. So you can confirm it from here also. Two raised to power 8, that is 256. So 2 raised to power n minus 1 is equal to 2 raised to power 8, and n minus 1 will be equal to 8. So n will be equal to 8 plus 1, that is 9. S9 will be equal to 6 outside of the bracket, that is A. A is given, that is 6 here, you see, 6, 6. So write down here 6, 2 raised to power 9 means 9th term, you see, n is equal to n, 9. So we write down 2 raised to power 9 minus 1 whole divided by 2 minus 1. So 6 into 2 raised to power 9 minus 1, that will be equal to 6 into 512. 512 minus 1, so 512 में से 1 माइनस कीजिए, आपको मिलेगा 511, that is 3066. This will be your answer of question number 2, fourth part. Now proceed to the question number 3rd. Find the sum of the n terms of the following series. The series is given, that is 12, 6, 3, 1.5, so and so. Our first term is 12. Common ratio यहाँ पर है 6/12, that is 1/2. तो कॉमन रेशियो देखते हैं 1/2, that is लेस देन 1. जो कॉमन रेशियो है लेस देन 1 है, इसलिए हम सम ऑफ n टर्म्स के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो होगा a ब्रैकेट में 1 माइनस r रेज़्ड टू पावर n होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस r. नाउ सी हियर इन प्लेस ऑफ a की जगह पर हमने क्या लिखा है 12 लिखा है, ब्रैकेट में 1 माइनस, इन ब्रैकेट में 1/2 का पावर n होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2. सो इसको सॉल्व करने पर 1 एंड 1/2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे को मिलेगा 1/2, दैट 2 विल बी मल्टीप्लाई टू 12, दैट विल बिकम 24, और इन ब्रैकेट के अंदर मिलेगा हमारे को 1 माइनस 1/2 रेज़्ड टू पावर n.
एंड यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में है जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया हुआ है वो है 20 -10 पाई -2.5 प्लस so and so, a is equal to 20, r is equal to -10/20, that is equal to -1/2. Summation of n terms is equal to 20 inside the bracket 1 minus -1/2 means कॉमन रेशियो माइनस में है तो माइनस को -1/2 को ब्रैकेट में रखिए पूरे का पावर n होल अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो को ब्रैकेट में रखा हुआ है -1/2। इसको सॉल्व कीजिए, इट विल बिकम 3/2। दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड टू 20 सो विल गेट 40/3। अब ब्रैकेट के अंदर -1 माइनस inside the bracket again -1/2 and it will remain as it is, so 40/3 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/2 whole raised to power n. This will be our answer of the question number 3 second part. Now the third part of the question number 3 is 9 -3 +1 -1/3 and so on. So a जो है यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है 9 है, कॉमन रेशियो -3/9 दैट इज इक्वल टू -1/3। अब यहाँ पर देखते हैं जो कॉमन रेशियो है दैट इज लेस देन 1, इसलिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये समेशन ऑफ n टर्म्स विल बी इक्वल टू 9 inside the bracket 1 minus again in bracket raised to power n whole divided by 1 minus 1/3। इसको सॉल्व कीजिए, नीचे वाला जो है वो बदल प्लस हो जाएगा 1 + 1/3, सो हमारे को मिलेगा यहाँ पर मिलेगा 4/3, 3 विल गो अप और 4 नीचे रहेगा, सो 9 3 जा 27/4 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस -1/3 की पावर n, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करने की ज़रूरत है, आंसर भी यही दिया हुआ है। नाउ फोर्थ पार्ट √3 + 3 + 9 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है √3 है, कॉमन रेशियो है 3/√3 दैट इज इक्वल टू √3। समेशन ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू √3 मीन्स फर्स्ट टर्म, देखिए √3 फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन रेशियो है √3, जो √3 है इट इज ग्रेटर देन 1 because the value of √3 is 1.732, so it is greater than 1, so √3 whole raised to power n -1 upon √3 - 1। अब यहाँ पर हम इसको रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, देखिए √3 - 1 √3 + 1, ऊपर भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई किया है और इनसाइड द ब्रैकेट जो है √3 raised to power n -1, तो हमारे को यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिलेगा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मिलेगा, और इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो देखिए a + b a - b, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, -1 रहेगा और इनसाइड ब्रैकेट √3 की पावर n -1,
अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा 3 प्लस रूट थ्री होल डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस रूट थ्री होल डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट में रूट थ्री रेस्ट पावर n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, यही हमारा आंसर होगा। नाउ द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 0.9, 0.09, 0.009, 0.0009 plus so and so. A is equal to 0.9. Common ratio is equal to 0.09 upon 0.9, that is equal to 0.1. Common ratio, it is less than 1. Common ratio is less than 1, therefore we use the formula Sn is equal to first term, that is 0.9. You see? So write down here first term, inside the bracket 1 minus 0.1 raised to power n whole divided by 1 minus 0.1. Ultimately you will get 0.9 upon 0.9. Inside the bracket we will get 1 minus 0.1 raised to power n. So this 0.9 and 0.9 will be cancelled. Inside the bracket we will get only 1 minus 0.1 raised to power n. इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। You use the formula Sn is equal to A r raised to power n minus 1 upon r minus 1 to find A1 means first term, Sn means summation of n terms. If An means nth term is 1000 and common ratio is 10, and find and n is equal to 7. So An means the nth term is equal to A1 bracket में 10 means common ratio is 10 here. So 10 raised to power n minus 1, that is A7 is equal to 1000 is equal to A1 10 raised to power 7 minus 1, that is equal to A1 is equal to 1000 upon 10 raised to power 6, that will be equal to 10 raised to power 3 minus 6. So 10 raised to power minus 3, that will be equal to 0.001. Summation of n terms, that is A1 in bracket r raised to power n minus 1 upon r raised to power 1, that will be equal to 0.001 bracket में लिखिए 10 raised to power 7 minus 1 whole divided by 10 minus 1. 10 raised to power minus 3 bracket में 10 raised to power 7 minus 1 upon 9. 10 raised to S10 is equal S7 is equal to 10 raised to power 4 minus 10 raised to power minus 3 upon 9. Solve it, you will get here 1 lakh minus 0.001 upon 9. सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हमारे को मिलेगा 9999.999 divided by 9. So we will get here summation of n terms will be equal to 1111.111. This will be answer of question number 4, first part. Now proceed to the question number 2, question number 4, second part. That is, we have to find n and Sn. If A1 is equal to 5 and An is equal to 320, R is common ratio is 2, An is equal to formula use कीजिए A1 into R raised to power n minus 1. This implies that
5 into 2 raised to power n minus 1, that will be equal to 320. So 2 raised to power n will be equal to 3 raised to power 20 divided by 5, that will be equal to 64. So 2 raised to power 6. So n minus 1 is equal to 6. So n is equal to 7. S7 is equal to 5 ब्रैकेट में लिखिए 2 raised to power 7 minus 1 upon 2 raised to power minus 1. That will be equal to further 5 into 128 minus 1 bracket closed, 5 into 127 into 635. Now third part, A9 और A1 हमें निकालना है. If n is equal to 9, common ratio is 2 and sum of nth term is given, that is 1022. Therefore 1022 is equal to A1 into 2 raised to power 9 minus 1 upon 2 raised to power 2 minus 2 into 1. So A1 is equal to A512 minus 1 upon 1, that will be equal to A1 into 511. So A1 again it will be equal to 1022 upon 511 divided you will get 2 as a quotient. A9. We have to work out the A9 because N9 is given here. So we have to work out the A9 first. So A1 into R raised to power 9 minus 1 is equal to 2 raised to power 2 raised to power 9 minus 1. Again it will be equal to 2 into 2 raised to power 8, that is equal to 2 raised to power 9 minus 112. This will be answer of question number 4, third part. Question number 5. If An is a geometric sequence, that is geometric sequence, and A1 is equal to 4, common ratio is 5, find A6 and S6. Here A6 is equal to 4 into 5 raised to power 6 minus 1, 4 into 5 raised to power 5, that is equal to 4 into 5 raised to power 3, that is 5 raised to power 3 into 5 to power 2. That is equal to 4 into 125. You see, 425 into 25. I have split it. In place of 5 raised to power 5 था, उसको मैंने क्या किया है 5 raised to power 3 into 5 raised to power 2. तो 5 raised to power 2 क्या होता है 25. 5 raised to power 3 होता है 125. So 25 into 4, that is 100. So 125, 100 पहले फर्स्ट ऑफ के 125 और उसके आगे डबल जीरो लगाइए क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना है. चलिए S6 निकालते हैं. इसके लिए क्या है A1 R रेस्ट टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन R रेस्ट टू पावर R माइनस 1. तो हमारा फर्स्ट टर्म है 4, कॉमन रेशियो है 5 रेस्ट टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1. 5 माइनस 1 4 होगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास बचेगा क्या 125 इंटू 125 माइनस 1. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. आपको रूल मालूम है कि 125 का यूनिट प्लेस तो 5 है, 25 रखिए. 12 के आगे वाला नंबर नेक्स्ट सक्सेसर नंबर 13 है, तो 12 इंटू 13, तो आपको आंसर मिलेगा 15,625. माइनस 1 करने पर 15,624.
एंड यही हमारे दो आंसर होंगे जो कि ये मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या स्टेट करता है? हाउ मेनी टर्म्स of the GP 3 and 3/2 and 3/4 and so are needed to give the sum 3069 upon 512. इसी हियर a इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, कॉमन रेशियो निकाल लीजिए। 3/2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा कॉमन रेशियो हो गया 1/2। तो सम ऑफ n टर्म्स ए ब्रैकेट में लिखिए 1 माइनस आर रेस्ट टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म के लिए 3 लिखिए, 1 माइनस आर की जगह पर क्या लिखेंगे हम? 1/2 रेस्ट टू पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट में लिखिए 1 माइनस 1/2 की पावर n होल अपॉन 1/2। तो ये 2 जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर 6, और ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस 1/2 की पावर n। देयरफॉर 6 इन ब्रैकेट लिखिए 1 माइनस 1/2 की पावर n दैट इज इक्वल टू 3069 अपॉन 512। ये देखिए दिया हुआ है 3069 अपॉन 512 इज इक्वल टू, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। पहले 6 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 3069 डिवाइडेड बाई 512 एंड 6, सो 1 माइनस 1/2 की पावर n विल बी इक्वल टू 3069 अपॉन 6 इंटू 512। अब 6 से देखिए 3 से कटेगा, 3 2 जा 6 एंड 3 से इसको काट दीजिए तो 1023 आएगा, और 1023 अपॉन 1024 इसको सॉल्व कीजिए। n माइनस 1023 अपॉन 1024 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n that is equal to 1/2 की पावर n is equal to 1024 minus 1023 upon 1024 is equal to 1 upon 1024. So 1/2 whole raised to power n is equal to 1/32 into 32 that is equal to 1/2 raised to power 5 into 2 raised to power 5 that is 32. 32 in place of this I have written this. So 1/2 raised to power 10. 1/2, you see, this will become 1/2 raised to power 10. So n is equal to 10 and answer will be the 10 terms. अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सम दिया हुआ है दैट इज 315। फर्स्ट टर्म है हमारा 5, कॉमन रेशियो है 2, फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अभी देखिए सम का मतलब है 5 इन ब्रैकेट 2 raised to power n minus 1 upon 2 minus 1 that is equal to 315, and it should be equal to 2 raised to power n minus 1, 2 raised to power 1 n, 2 raised to power n minus 1 is equal to 315 into 1 divided by 5। इसी ये 5 है नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर जो रहेगा 1 इधर ही रहेगा, तो हमारे को जवाब मिलेगा 2 raised to power n minus 1 and that will be equal to 63।
So 2 raised to power n is equal to 63 plus 1, that is 64. 2 raised to power 6 is equal to n is equal to 6. Numbers of terms will be equal to, that is 6. So A6 means the number term क्या होगा, 5 into 2 raised to power 6 minus 1, that is equal to 5 into 5 by 2, again 5 into 32 is equal to 160. This will be our answer of question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, s इज इक्वल टू 315 दिया हुआ है, समेशन दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ 5, कॉमन रेशियो दिया हुआ है 2, फाइंड द लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। अब इस समेशन को हम पता करेंगे कि ये कौन तीन नंबर पर है। देखिए पाई ए में फर्स्ट टर्म 2 रेज़ टू पावर n, कॉमन रेशियो 2 है तो 2 रेज़ टू पावर n -1 upon 2 minus 1, and it is equal to 315. So 2 raised to power n minus 1 is equal to 315 into 1 divided by 5. Solve it, you will get 63. So 2 raised to power n will be equal to 63 plus 1, that is 64. अब 64 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 raised to power 6। अभी जब 2 raised to power 6 हो गया तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे। देखिए बेस दोनों का सेम है 2 2, तो पावर भी सेम होना चाहिए। n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6, सो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 6। A6 मीन्स द सिक्स्थ टर्म, दैट इज 5 into 2 raised to power 6 minus 1, that is 5 into 2 raised to power 5, that is 5 into 32, that will be equal to 160. The last term will be 160. Question number 8. Question number 8 में क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है 729 और सेवेंथ टर्म T7, सेवेंथ टर्म इज 64। डिटरमिन S7, हमारे को 7 टर्म्स का टोटल निकालना, सम ऑफ द सेवेंथ टर्म, 7 term, that is T7 is given, that is 729 into r raised to power 7 minus 1 is equal to 64. So r raised to power 6 is 7 minus 1, that is 6, is equal to 64 divided by 729. अभी देखिए 729 और 64 दोनों को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा कि ये 64 का 2 raised to power 6 और 729 का 2 raised to power 6, तो 2 by 3 whole raised to power 6 is equal to r raised to power 6. So common ratio will be equal to 2 by 3. 2 by 3, that will be the common ratio. Therefore, you see the common ratio is less than 1. So in place of S, to find out the S7, we will first of all फिक्स करेंगे फार्मूले को। 729 ब्रैकेट के अंदर लिखिए 1 minus 2 by 3 whole raised to power 7 upon 1 minus 2 by 3. इसी will get 729 into 3 by 1, inside the bracket 1 minus 2 by 3 to power 7. Here 3 to the power 7 is equal to 1 minus 2 to the power 7 upon 3 to the power 7. So 3 to the power 7 minus 2 to the power 7 into 3 to the power 7 into 3 to the power 7. ये देखिए 3 की पावर 7 को अंदर डाल दीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो हमारे को ये मिलेगा। और 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 को जो फार्मूला दिया हुआ है या टेबल दिया है उससे वर्कआउट कीजिए, आपको मिलेगा 2187 माइनस 128, दैट इज इक्वल टू 2059। इसी
3 raised to power 7. 3 raised to power 7 minus 2 raised to power 7, that is 3 raised to power 7. 2187 or 2 raised to power 7, that is 128. 128. तो हमने रख करके इसको माइनस सब्ट्रैक्ट किया, 2059 आया. Now proceed to the question number 9. Find the sum of the series 2 plus 6 plus 18 up to 4374. Here the first term is 2, common ratio 6 by 2, that is 3, and common ratio is greater than 1. So we have to use it. 4374 is equal to, this is the term, last term. So 2 into 3, 2 into 3, 3 raised to power n minus 1. So 3 raised to power n minus 1 will be equal to 4374 divided by 2, that is 2187. So 3 raised to power n minus 1 will be equal to 3 raised to power 7. Here देखिए आप, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया ये मेथड से, या आप के पास टेबल बना रखे हैं पहले से, तो 3 raised to power 7, इसी 3 raised to power 7 is equal to 2187. 2187. So in place of that you can write down 3 raised to power 7. So 3 raised to power n minus 1 and 3 raised to power 7. So the base are same and they are equal, there is equal sign, so the power will be also equal. So n minus 1 is equal to 7, n minus 1 is equal to 7, therefore n is equal to 7 plus 1, that is 8. So S8, we have to find out S8, that is 2. 3 raised to power 8 minus 1 upon 3 minus 1, again it will give you the 6561 minus 1 upon that, sorry, it is equal to, minus कर दीजिए 6560 and this will be your answer. चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. दैट इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस √3 3 3 √3 must be taken to make the sum 39 plus 13 √3. A is equal to √3, R is equal to 3 upon √3, that is √3. Common ratio is greater than 1. We have to use this formula, that is Sn is equal to √3 inside the bracket √3 whole raised to power n minus 1 upon √3 minus 1. आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए. So √3 inside the bracket √3 plus 1 upon 3 minus 1. Here in the numerator √3 raised to power n minus 1. Three into √3 by 2. ब्रैकेट में लिखिए √3 whole raised to power n minus 1 and it is given that 39 plus 13 √3. अब देखिए जो ब्रैकेट में है उसको इधर साइड, इसी से लेफ्ट हैंड साइड में रखिए. तो √3 raised to power n minus 1 विल बी इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा. सो 39 प्लस 13 √2 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस √3 इंटू, रेशनलाइज करने के लिए देखिए डिनोमिनेटर को मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ. सो 3 माइनस √3, 3 माइनस √3. सो यहाँ पर मिलेगा आपको √3 रेज़्ड टू पावर n minus 1 विल बी इक्वल टू, 2 बाहर है, देखिए इस वाले को मैं लिख दिया 39 प्लस 13 √3, ये 33 √3 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 6.
तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में √3 एंड 2/6 दैट इज 1/3 इंटू 13 इंटू, हम देखिए यहाँ से 13 और यहाँ से भी 13 कॉमन ले लिया, 13 बाहर आ जाएगा, 13 3 जा 39, तो आई हैव रिटन हियर 3, यहाँ पर 3 रख दिया, √3, तो 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, a प्लस b, a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 13/3 विल बी इक्वल टू, इन ब्रैकेट में लिखिए 6 माइनस 3, सॉरी 9 माइनस 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, सो 9 माइनस 3 दैट इज 13 इंटू 6 अपॉन 3, तो 3 से कट कीजिए, 3 to the 6, so 2, 13 to the 26, so √3 whole raised to power n is equal to 26 plus 1, so 26 plus 1 is equal to 27. This 27 can also be written as 3 raised to power 1/2. देखिए √3 था, √3 को मैंने 1/2 में कन्वर्ट कर दिया, तो 3 raised to power n/2 विल बी इक्वल टू 27 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 3 की पावर 3। तो इनको देखा कि ये बेस जो है सेम है, पावर भी सेम होना चाहिए, तो n/2 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर द n इज इक्वल टू 6। दिस विल बी आवर आंसर of question number 10.